Hello everyone. Am I visible and audible? Everyone, please confirm my visibility and audibility. Hi Shubham Kumar, Ashwini Kumar, Vishwani Verma. Hello Akash. Good morning. Very good morning everyone. Yeah. Hi Adarsh. Hi PUBG. Hello Technova. Hello everyone. Once again, very good morning. Hope you are doing great. आदर्श जी कल से थोड़ा बेहतर है but still not completely recovered, but better than yesterday. Okay, thank you. Hello Bhagyashri. In the last class we have discussed about types of control statements, selection statements, along with operator precedence associativity example, right? Nihit Srivastava, yeah, you will get definitely some idea. Definitely it would be useful. Okay, and today we will focus on iterative control statements, unconditional control statements, then we move on to strings and lists after we solve the homework question that I have given yesterday, and let us have the discussion with examples. Okay. Hi Vamshi Krishna, hello Shivani, hello Nihit, hello everyone. Yeah. So guys, this is the homework question I have given. Tell me what is the answer for this? What is the count value for this? Have you done it? If so, please let me know the answer. Technova says -4. Vashani Verma says -3. मानसी -4. ओके, सब लोग आपका जवाब दे दीजिए होमवर्क क्वेश्चन का. शिवानी को भी -4 आए, वंशी कृष्णा को भी -4 मिले. अच्छा, बस वशानी वर्मा शायद आपको ही -3 आया होगा. एक बार आप भी रीवेरीफाई कर लो. मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको. लेट अस सी. काउंट इज 1 इनिशियली, I is equal to 0,
while I less than or equal to 10 means I starts with 0 and every time we are incrementing I by 2. So I0, I2, I4, I6, I8, I10. Now 0 less than or equal to 10 is true. So match 0. Where is case 0? Here. So it will make count is equal to count minus 2, that is 1 minus 2 minus 1. I is 2. We have no case 2 here, so default gets executed. What it is doing? Count equal to count minus 1, so minus 1 minus 1 minus 2. I becomes 4. We have no case 4, again default gets executed, so it again says count is equal to count minus 1, so it becomes minus 3. When I is equal to 6, count equal to count minus 3 minus 3 divided by 2. So this would be minus 1. Next, I is equal to 8, we don't have case 8. So count will be minus 1 minus 1 minus 2 again. I is equal to 10, we have no case 10 also. So count becomes minus 2 minus 1 minus 3. Is this correct? One mistake is there here. What is that mistake? There is one mistake here. I believe Vashani Verma, you might have done like this, right? But there is one mistake or one error here. What? Where? Here. It is actually, देखो, 3 when you divide with 2, actually this is 1.5. Right? So, actually this value will be minus 1.5. So, minus 1.5 is rounded off to lower bound, that is minus 2. So, here minus 2 minus 1 minus 2 minus 1, that is minus 3, minus 3 minus 1, that is minus 4. So, the right answer would be minus 4. So, directly this division operation may not be coming as a independent question in the exam, but this operation plays a vital role in the output. If you see this question, we have other subtractions, additions, multiplications also, but this division operation played a vital role in the answer. Like this, whatever you learn, while you are learning, you might feel like it is a very small concept. This small concept, will it be useful in the GATE exam? Definitely like this. So, जो भी आप सीखते ना,
वो कभी वेस्ट नहीं होते. वॉट एवर यू लर्न विल नॉट गो वेस्ट. So while learning, learn with interest. Okay? Am I clear? Please confirm. Clear? Okay. Now, yesterday we have discussed till selection statements only. So let us continue control statements and finish this part first. Then we then we move on to today's topic, that is strings and lists. Okay. Now, what is this iterative control statement? We have seen, based on the result of the given expression, दिए सो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करके वो रिजल्ट बेसिस पे क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करना है, वो अगर हम डिसाइड करें तो उसको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट कह सकते, या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कह सकते, या कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कह सकते. क्या है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स? इफ एल्स, मैच केस, ये इफ एल्स सब फॉर्म्स बहुत है ना. अब ये इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स थोड़ा सा वेराइटी कंट्रोल स्टेटमेंट्स है. सिलेक्शन स्टेटमेंट्स जैसा ही होता लेकिन थोड़ा एडेड फंक्शनैलिटी है. क्या है सर? ये इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स का ताकत क्या होता? रिपीटिशन. Repetition is what the meaning of iteration. अगर आप स्टेटमेंट एक बार लिख के उसको आप 10 बार एग्जीक्यूट करा सकते, 100 बार एग्जीक्यूट करा सकते, 1,00,000 बार, 1 करोड़ बार, जितना टाइम चाहिए उतना नंबर ऑफ टाइम्स आप एग्जीक्यूट करा सकते. बस एक बार ही आप लिखेगा एक बार, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन आप जितना बार रिपीट करना चाहते उतना बार आप रिपीट कर पाओगे. किससे? ये इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स से. सिलेक्शन स्टेटमेंट से वो नहीं होता. सिलेक्शन स्टेटमेंट का क्या हाल है? वो एक बार कंडीशन वेरीफाई करते, ट्रू है तो एग्जीक्यूट करते, फॉल्स है तो बाहर भेज देते कंट्रोल को, बस उतना ही. वो कितना बार एग्जीक्यूट होते? एक बार कंडीशन ट्रू है तो एक बार ही एग्जीक्यूट होते. वो बार बार रिपीटिटिवली कंडीशन चेक नहीं करते, रिपीटिटिवली एग्जीक्यूट नहीं होते. लेकिन ये इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसा नहीं. रिपीटिटिवली बार बार एग्जीक्यूट कंडीशन चेक करते, कंडीशन ट्रू होने तक, कंडीशन या एक्सप्रेशन ट्रू होने तक वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते रहते. ओके. ये इटरेशन रिपीटिशन के लिए और एक नाम भी हम दे सकते, वो है लूप. लूप या साइकिल, ये सारे का मतलब एक ही होगा. What are different iterative statements or loops in the Python? We have two types of loops. One is while loop, other is for loop. This while loop you can use alone or with
else you can use. सेम वे फॉर लूप आप सिर्फ फॉर लूप ही यूज कर सकते हैं, नहीं तो फॉर एल्स भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. ऑल डियर स्टूडेंट्स, with all due love and respect towards all the students, मैं एक बात कह रहा हूँ, सब लोग सुनिए, समझ लीजिए, फॉलो करिए. आपको जो मन में आएगा वो सवाल तुरंत पूछने का पहले थोड़ा सोच लीजिए, मैं यहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ वो फ्लो डिस्टर्ब होगा या नहीं, मेरे साथ बहुत बच्चे इधर पढ़ रहे, उसको भी डिस्टर्बेंस होगा या नहीं मेरा सवाल से, ये थोड़ा सोच लीजिए. आप कुछ भी जेनरिक सवाल ऐसी बीच में पूछे तो मेरे को आंसर करना मुश्किल होता, क्योंकि मेरा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता, वो सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट को भी डिस्टर्ब करते. तो अगर आपको कुछ भी जेनरिक क्वेश्चंस पूछना है, आप सेशन से पहले ही पूछ सकते, नहीं तो पूरा सेशन के बाद भी पूछ सकते. प्लीज अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ इट, इंपॉर्टेंस ऑफ इट, एंड प्लीज डू ट्राई टू फॉलो इट. ओके, थैंक यू. या सो iterative control statements, we have two majorly, while, for. You can use only while or you can use only for. No, there is another alternate. What is that? While with else, while, for with else, while with else, for with else. So while else, for else. How to use this? First, if we look at the syntax, while expression statement or statements. बस इतना ही. इसमें क्या है, ये वाइल का इंडेंट पे आप ध्यान रखो, क्योंकि पाइथन में इंडेंटेशन से ही ये ब्लॉक्स आइडेंटिफिकेशन होगा, राइट. तो ये वाइल के अंदर जो भी जितना भी स्टेटमेंट्स आप लिखना चाहोगे, जो भी स्टेटमेंट्स आप रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना चाहते, वो स्टेटमेंट्स आप वाइल के अंदर रख सकते, वाइल के अंदर आप रख सकते. ओके. लेकिन एक बात हम ये लूप्स लिखते वक्त, एक्सपेशली पाइथन में वाइल लूप लिखते वक्त ध्यान रखना. क्या है, वाइल लूप सबसे डेंजरस लूप होगा, डेंजरस प्रोग्रामिंग एलिमेंट होगा पाइथन में, बिकॉज it causes infinite execution. Infinite execution means there is no end. There is no end at all. Of course, इंटरप्रेटर वो पहचान के उसको रोक देते, वो ठीक है, बट एग्जीक्यूशन तो बैकग्राउंड में होते रहते. वो ये कर्नल बोलो आप, या जो भी एग्जीक्यूशन इंजन है, वो तो ये वाइल लूप के साथ ही बैठते. आपको आउटपुट दिख रहे या आउटपुट रुक गए वो दूसरी बात है. आउटपुट इनफाइनाइट टाइम प्रिंट हो रहे या रुक गए वो दूसरी बात है. लेकिन बैकग्राउंड में काम तो होते रहते. मतलब आपका प्रोसेसर या ऑपरेटिंग सिस्टम या इंटरप्रेटर जो भी रिसोर्सेस हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए अलाइंड है, वो रिसोर्सेस ये लूप एग्जीक्यूट करते रहते, ये लूप के साथ ही रहते. दूसरा काम करने के लिए ये लूप
वो रिसोर्सेस को एलो करते नहीं। सो ये सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए हम ये ध्यान रखना है, वाइल लूप स्पेशली, फॉर लूप से वो प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम फॉर लूप इनफाइनाइट में नहीं जाएगा, आपको पता चलेगा क्यों, समझ में आएगा क्यों, एक बार हम फॉर लूप डिस्कस करें तो ये क्या है, until the given expression result is false, statements gets executed, right? Until expression result becomes false, statement or statements will get executed. Okay, so now this is expression if results true always, then it causes infinite execution. So we should make sure this expression becomes false at certain point of time. Maybe after 1000 iterations it becomes false, 1 lakh iterations it becomes false, maybe at certain point, but not infinitely. So it is always advised, it is advised that we have to write the statement to avoid infinite execution. अगर आपको ये इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन अवॉइड करने के लिए नहीं समझ में आए, आप तो कुछ तो लिखे, कुछ तो आप लिखे, लेकिन वो तो इनफाइनाइट में गए, इनफाइनाइट में जाने वाला है, तो इंटरप्रेटर एरर नहीं देगा सर, एरर नहीं आएगा, क्योंकि सिंटैक्टिकली वो वैलिड है, तो वो एरर आपको कंपाइलेशन टाइम पे एरर नहीं आएगा, मतलब ट्रांसलेशन टाइम पे एरर नहीं आएगा। अश्विनी कुमार ये बोल रहे, एडवाइज्ड इज टू अवॉइड इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन। ओके, सो इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल्स हम अभी डिस्कस करके हम फॉर लूप पे जाएंगे। फर्स्ट, लेट I is equal to 1 while I less than 5, print high. ओके, ठीक है। So what would be the output of this? इसका आउटपुट क्या होगा? अश्विनी कुमार, मैं हर लाइन रिपीट नहीं कर सकता हूं, अब बाद में आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें क्लियरली आपको समझ में आएगा, ठीक है? आपको पीडीएफ तो मिल जाएगा, वहां आपको सब कुछ क्लियरली दिख जाएगा। Until expression becomes false, statement will get executed. The output would be what? High printed infinite times. Why? I is 1, 1 less than 5 true, high is printed. And I value is always 1. I value is always 1.
1 is always less than 5. So printed like that. How many times? I gets printed infinite times. So this is what we should avoid. यहाँ अगर आप देखोगे मैं इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन को हैंडल नहीं किया था, लेकिन ये तो एग्जीक्यूट होगा. इट विल नॉट गिव एनी एरर. ओके, फाइन. नाउ let us check this. Let count is equal to 0, I is equal to 1, while I less than or equal to 5, count is equal to count plus I. I is equal to I plus 2. Print count. So इसका आउटपुट क्या आएगा बेटा? इसका आउटपुट क्या आएगा? Ashwini Kumar, do you want me to write little big letters? Shall I write the font little big? I'll try, because usually मेरे को ये आदत हो गया ये font size थोड़ा बड़ा लिखने के लिए कोशिश करता हूँ. क्या है बेटा इसका आउटपुट क्या होगा? काउंट वैल्यू क्या होगा? Nine. Okay. See this. I is 1. 1 less than or equal to 5 true. So count is equal to count plus I. 0 plus 1 1. Okay. Then I becomes 3. 3 less than or equal to 5 true. So count becomes count plus I. 1 plus 3 4. Then I becomes 5. 5 less than or equal to 5 true. So count becomes count plus I, that is 9. Then I becomes 7. 7 less than or equal to 5 false. So now the loop comes out. Print count. So what is count? Print count means what gets printed? 9 gets printed. So इसका जवाब होगा 9. समझ रहे बात?
let's say I take another example. Let result is equal to 1, I is equal to 1, j is equal to 5, while I less than 5, result is equal to result plus I, while j greater than I, result is equal to result plus j, j is equal to j minus 2, I is equal to I plus 2. Print result. What I have done? What I have done? एक वायल के अंदर और एक वायल लूप लिखा था. इसको हम क्या कहते? नेस्टेड लूप कहते. जैसा नेस्टेड इफ है, नेस्टेड इफ एल्स है, ऐसी नेस्टेड लूप, नेस्टेड वाइल या नेस्टेड लूप. फटाफट इसका जवाब क्या होगा आप गिन के देना, गिन के बता दो. क्विक. Are you working on it? No off topic questions in the mid of the class. At the end of the class you can ask. 16. Okay. Adarsh got 10. Technova got 13.
Okay, what about others? Chalo, let us solve it. I1 J5 result 1, while I less than 5 and I is incremented by 2 times. So each time I becomes incremented by 2. So when I is 1, 1 less than 5 it gets executed, and when I is 3 it gets executed. Then when I becomes 5, 5 less than 5 तो false होगा. So only 2 times the outer loop runs. Now when I is 1, result equal to result plus I. So result will be 1 plus 1, that is 2, while j greater than I. J is what? 5. 5 greater than 1. True. 5 greater than 1, true. So result equal to result plus j. Result is equal to 2 plus 5, 7. Then j is decremented by 2. So j becomes 3. 3 greater than 1, true. Result is equal to result plus j, 10. Then j becomes 1. 1 greater than 1, false. Now I becomes 3. So result क्या हो गया? पहले 2 हुआ, then 7, then 10. अब I becomes 3. Result is equal to result plus I. 10 plus 3, 13. Now while j greater than I, what was j? j कितना था? 1 था. 1 greater than 3, false. So second time inner while loop false हो गया. Now I is equal to I plus 2. I is equal to I plus 2. I becomes 5. 5 less than 5, false. So here it ends. Print the result. Result अब क्या हुआ था? 13. So print the result means what gets printed? 13 gets printed. 1, 3, 13. Did you understand? Is this clear for everyone? Okay, fine. Now let us move on to for loop. What would be the syntax of for loop? Syntax means format. How to write this, how to use this for loop. So for of object, whatever the
class object you wanted to take, that you can take in the iterable या आप अगर रेंज देना चाहे तो आप ऐसा दे सकते, रेंज ऑफ स्टार्ट स्टॉप स्टेप स्टेटमेंट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स. Same nature as while. Until this object becomes false, the statements gets executed. Means until that object refer to false value, or else when you have given this stop, until that stop limit is reached, the statement or statements gets executed. Okay, so what is this object in iterable, we will understand just in a moment. Once we discuss strings lists, you will understand. So ये समझने के लिए थोड़ा इंतजार करो, ये ब्रैकेट्स भी नहीं रहता भैया. हम अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते. फॉर I in the range of 5, print I end with space. So इसका आउटपुट क्या होते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, यहां हम कुछ स्टार्ट स्टॉप स्टेप में एक ही वैल्यू दिए. इसको क्या समझ लेगा, इसको अश्विनी कुमार ये बोल रहे आप, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स. मेरा राइटिंग इतना गंदा है क्या, इतना समझ में नहीं आ रहे. अरे यार हाँ, here we have given only one value. So will it be treated as start or stop or step? It will be treated as stop value. Stop. So we can say this is like mandatory. But start, stop, we can say this start is optional. Step is also optional. अगर ऑप्शनल है तो हम अवॉइड कर सकते. अगर हम कुछ नहीं लिखे तो क्या डिफॉल्ट लेगा, डिफॉल्ट स्टार्ट होगा 0, डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू होगा 1. डिफॉल्ट स्टार्ट होते 0, डिफॉल्ट स्टेप होगा 1. मतलब ये स्टेप क्या है, इंक्रीमेंटिंग वैल्यू और चेंजिंग वैल्यू. वो इंक्रीमेंट ही नहीं होना ना, होना बोल के नहीं, अपडेशन वैल्यू, कितना अमाउंट से जो ऑब्जेक्ट आप दे रहे वो अपडेट होना है. यहां आई क्या है, ऑब्जेक्ट. आई इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, वो ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट होते, अगले इटरेशन को कितना अमाउंट
में इंक्रीमेंट होना या अपडेट होना है, +1 से अपडेट होना है, वो डिफॉल्ट होगा। यहां मैं कुछ नहीं लिखा था, बस एक ही नंबर लिखा था, स्टार्ट स्टेप नहीं लिखा था, तो डिफॉल्ट स्टार्ट 0 होगा, डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। सो आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट होते, अगली बार 1 प्रिंट होते, देन 2, देन 3, देन 4। ये याद रखो, स्टॉप जो भी आप वैल्यू देते वो वैल्यू एक्सक्लूडेड है, ये तो मैंडेटरी है, एंड द वैल्यू इज एक्सक्लूडेड फॉर आइटरेशन। गॉट इट? ओके सर, एक बार हमको ये स्टार्ट स्टेप वाला भी बता दो ना। बिल्कुल, अब देखो, फॉर आई इन द रेंज ऑफ 2, 10, 3 प्रिंट आई एंड विथ स्पेस। सो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट वी आर टेलिंग, स्टार्ट विथ 2 अप टू 10, 10 एक्सक्लूड करके, तो स्टॉप विथ 10 एंड एवरी टाइम बाय व्हाट वैल्यू इंक्रीमेंट होना है, बाय 3। सो फर्स्ट आई 2 होगा, देन आई वैल्यू बिकम्स 5, देन आई वैल्यू बिकम्स 8, देन 8 + 3 11, 10 से बाहर जा रहे, 10 से ज्यादा है ना, 10 बिलो ही रहना है, 10 भी नहीं, 10 इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड, मतलब 9 तक ही रहना है। तो हमको क्या मिलेगा आउटपुट, 2, 5, 8 आउटपुट मिलेगा। समझ रहे सर? हमको सी लैंग्वेज में तो आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस बहुत आदत हो गई है सर, प्रैक्टिस बहुत हो गए। ऐसी अगर कुछ डिक्रीमेंटिंग करना है मेरे को, आप तो यहां इंक्रीमेंटिंग लूप का ही पता है, थोड़ा डिक्रीमेंटिंग का भी बताओ सर, अगर आप पूछे तो मैं ये दे सकता हूं। देखो, फॉर आई इन द रेंज ऑफ 10, 1, -2 प्रिंट आई। सो इसका आउटपुट क्या होगा, मैं यहां क्या कर रहा हूं, स्टार्ट विथ 10 एंड every time what should be updated, 10 plus -2, that means every time the updated value must be -2, means हमेशा -2 से आप डिक्रीमेंट करते जाओ। सो पहले आई वैल्यू 10 होगा, देन 8, देन 6, देन 4, देन 2, 2 - 2 0, 1 से पहले ही हम रुकना है, मतलब 2 पर ही रुकना है। डिक्रीमेंटिंग भी सेम, 1 इज एक्सक्लूडेड। सो इसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 10, 8, 6, 4, 2 आउटपुट मिलेगा, राइट? ठीक है, ये देखो, लेट काउंट इज इक्वल टू 1 फॉर आई इन द रेंज of
count comma 10 comma 2 count plus is equal to count plus I. count plus is equal to count plus I. लूप के बाहर आके प्रिंट काउंट. सो काउंट क्या होगा? व्हाट वुड बी द काउंट वैल्यू हियर? टेल मी. हाँ, इट इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब डिक्रीमेंटिंग लूप पे ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसा भी हम करना पड़ेगा कभी कभी. आप ऐसा समझ लो वो वैल्यू एक्सक्लूड करना है बस. व्हाट वुड बी काउंट वैल्यू? शिवानी, प्रिंट काउंट इज आफ्टर द फॉर लूप, मतलब उतना आउटपुट तो हमको नहीं आएगा. $42. Okay. What about others? Let us check. Count is 1 for I in the range of count 10 2. ये थोड़ा बिगिनर्स को शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग होता होगा. सर हमेशा काउंट से स्टार्ट होते क्या, कैसा लेना है बोल के. यहाँ आप देखो, दिस इज considered only at the beginning. So initial count value only taken. Every time you are changing count, but it has no impact. It won't take every time. First time only to start with what should be the starting value. For that
इट रिफर काउंट। सो काउंट क्या है? 1। मतलब I 1 से स्टार्ट होते हमेशा टू वैल्यू 2 से हम अपडेट कर रहे, तो I वैल्यू 3 होगा, I वैल्यू 5 होगा, I वैल्यू 7 होगा, I वैल्यू 9 भी होगा। अब काउंट प्लस इज इक्वल टू काउंट प्लस I, इसका मतलब क्या होता है बेटा? आप थोड़ा समझ लेना। दिस इज काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस I, दैट मीन्स 2 इंटू काउंट प्लस I। आप कैसा भी ले सकते। फिर अश्विनी पूछते, हाँ, लेट इट बी। सो व्हेन I is equal to 1, count will be 2 into count plus I, that is 3. When I is equal to 3, 2 into 3 plus 3, that is 9. When I is equal to 5, 2 into 9 plus 5, that is 23. When I is equal to 7, 2 into 23 plus 7, that is 53. When I is equal to 9, 2 into 53 plus 9, 115. So the final count value would be 115. Is this clear? You might have ignored or overlooked this. Count plus is equal to count plus I. ओके, ये तो समझ में आया सबको? Let's say I am giving ANS is equal to 1, I is equal to 2 for J in the range of 3, 10, ANS is equal to ANS plus I plus J, while I less than ANS
j is equal to j plus 1, I is equal to I plus j. Okay. Now print ANS. Try giving me the answer. Are you working on it? Let me know if it is causing infinite execution, because I have written it randomly. Okay, I will also solve it.
You can check yourself. ANS is equal to 1, I is equal to 2 for j in the range of 3, 10. Here step is not given. So default step value will be 1. So j will be 3. Now ANS is equal to ANS plus I is what? 2 plus j, that is 6. While I less than ANS, 2 less than 6 true. J is equal to j plus 1. What was j? 3. J is equal to 4. Means j becomes 3 plus 1, that is 4. I is equal to I plus j. I equal to, what was I? 2 plus 4, that is 6. Now 6 less than 6 false. Now j becomes 4. ANS is equal to 6 plus I, 6 plus j. What was j? 4. So this would be 6 plus 6, 12 plus 4, 16. I less than ANS, 6 less than 16 true. J equal to j plus 1. J becomes 5. I is equal to I plus j. I becomes 6 plus 6 plus 5, that is 11. Then 11 less than 16 is true. J becomes j plus 1. I becomes 12. So this becomes until 15 less than 16. But here ANS is not changing. Finally we want ANS value. Okay. So j becomes 5. ANS will be, but we want IJ values, इसीलिए हमको करना ही पड़ेगा. मतलब I वैल्यू तो होना चाहिए यहाँ. 12 लेस देन 16 ट्रू होगा. J 7 होते, I 13 होते. Then J 8, I 14. J 9, I 15. J 10, I 16. Here it ends. Now J 10 से फिर 5 को असाइन होते. ANS will be ANS plus I is 16 plus J is 5. So this would be 16 plus 16, 32 plus 5, 37. Now until I less than 37, 16 less than 37, J becomes J plus सॉरी एक मिनट रुको.
यहाँ when I is 11, j becomes 6, I becomes I plus j. Eleven plus 6, 17. 17 less than 16 false. So here it ends. Now j becomes 5. Answer will be answer plus I is 17 plus j is 5. This is 16 plus 17, 33 plus 5, 38. I was adding with only 1 always, but here we should add with j, right? Okay. Now, what was I value? 17. It was not 16, it was 17. So now 17 less than 38 तो true है. So now I becomes, j becomes 6. I becomes 17 plus 6, 23. j becomes 7. 23 less than 38 तो true है, इसीलिए j 7 होगा. I 23 plus 7, 30. 30 less than 38 तो true है. j becomes 8. I becomes 30 plus 8, 38. Now 38 less than 38 तो false है. So when I was 38, it is coming out. Now j becomes 6 again. ANS will be 38 plus 38 plus 6. This is 38 plus 38, 76 plus 6, 82. Now 38 less than 82. ओ ये तो बहुत बड़ा हो रहे, ये तो बहुत बड़ा हो रहे. सो मैं इसको थोड़ा, आपको तो प्रोसेस तो समझ में आते, मैं बस 7 लिख रहा हूं बेटा, बिकॉज इट इज टेकिंग मच टाइम. आप 10 के लिए यही प्रोसेस में आप खुद एवेल्युएट कर लेना, ठीक है. 38 लेस देन 82 ट्रू है. अब j 7 होगा. I 38 plus 7, 45. When j is 8, I 45 plus 8, 53. When j is 9, I 53 plus 9, 62. When j is 10, I 62 plus 10, 72. When j is 11, I 72 plus 11, 83. So here it ends. When I is 83, 83 less than 82 is false. So here it ends. Now I have made it 3 to 7 only, so up to j value 6 it gets executed. Now print ANS means output would be 82. इसके लिए 10 के लिए तो ये बहुत बड़ा वैल्यू होगा, बस मैं रैंडमली लिखा था इसीलिए थोड़ा बिग प्रॉब्लम बन गए. आदर्श, बस आप ये लूप फॉलो करना, ये कंडीशन चेक करते जाना. जब तक ए कंडीशन फॉल्स होगा तब इनर लूप एग्जीक्यूट होते रहते, देन आउटर लूप, इनर लूप, आउटर लूप, ऐसा
हर आउटर वैल्यू के लिए इनर लूप आप चलाना पड़ेगा। ओके, whoever were not understanding it, please watch it again, solve it again, definitely you will get it. Okay, one last problem देता हूं, then we move on to the other. Let result is equal to 1 for I in the range of 2, 7, 3 for j in the range of I result is equal to result plus I plus j. Print result. Give the answer for this. Others, when it is coming to outer loop, from 8 j again modifies to 6. J is updated from value 8 to value 6 again. Hurry up. बस आउटर लूप 2 बार ही चलाते यार। देखो, हाउ j gets modified I am explaining. ध्यान देना सब लोग। I is equal to
2 हमेशा +3 होना है, बिफोर 7 एग्जीक्यूट होना है. So I becomes 2, I becomes 5, next I becomes 8. 7 से बाहर जा रहे, so यहाँ 2 बारी एग्जीक्यूट होते. When I is 2, for j in the range of I means when j is 0, j is 1. That means for j in the range of 2. Here for j in the range of 5. What does that mean? 0 to 2. That means 0, 1. Here 0, 1, 2, 3, 4. Like that. Right. So j is equal to 0. Now result equal to result plus I plus j, that is 3. J becomes 1. Result is equal to result plus I plus j, that is 6. Now I is 5. J will go up to I means 5 times. So when j is 0, result will be 6 plus 5 plus 0, 11. When j is 1, 11 plus 5 plus 1, that is 17. When j is 2, 17 plus 5 plus 2, 24. When j is 3, 24 plus 5 plus 3, 32. When j is 4, result is equal to result plus I plus j, 41. So what would be final result? 41. Is this clear? अभी थोड़ा गेट लेवल का फीलिंग आ रहे? Next, jumping control statements. What are jumping control statements? Break, continue, pass, return. These 4 are said to be jumping control statements or unconditional control statements. In this return statement we will discuss in functions concept. So about these 3 we will discuss now. What does break do? Break it causes the control to
move out of the current loop. And what this continue do? It causes the control to move to beginning of the next iteration, beginning of the next iteration in the next iteration of respective loop. And what does this pass do? Pass is just a placeholder statement to avoid, whenever we wanted to write empty cases or functions or methods or classes, interpreter does not allow anything empty. So just for an interpreter to allow empty template, we use pass. I think last class में भी मैं ये बोला था. Okay. Now just to understand this break, continue and pass, बस मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए कोशिश करता हूं. लेट अस सपोज मैं ऐसा लिख रहा हूं, फॉर आई इन द रेंज ऑफ लेट्स से 5, if I write if I is equal to 3, break print I, for I in the range of 5, if I is equal to 3, continue print I. Okay, Technova, take care. So if you see, look at this. What would be the output for these two? आप आउटपुट देखें तो आपको फर्क इजीली समझ में आएगा. When I is 1, I is 2, if condition false है. So when I is 1, I is 2, if will not execute. So 0, 1, 2, not 1, 2, 0, 1, 2. Now when I is equal to 3, condition true हो गया, break means control directly causes out. मतलब I4 वैल्यू या बाकी जो भी जितना भी इटरेशंस रहने दीजिए, वो सारे इटरेशंस इग्नोर्ड है. अगर आप ये देखोगे, फॉर I इन द रेंज ऑफ 5, I इक्वल टू 3 है तो कंटिन्यू करो. यहां आउटपुट क्या मिलेगा आपको? I 0 से स्टार्ट हो रहे 1, 2, जब I 3 होता तब बोल रहे क्या? कंटिन्यू. मतलब
देन कंटिन्यू, गो टू द नेक्स्ट इटरेशन, मतलब अगले इटरेशन का वैल्यू लेके आगे बढ़ो। तो अगले इटरेशन का वैल्यू 4 होगा, सो इसका आउटपुट 0 1 2 4 आएगा, लेकिन यहां तो 0 1 2 ही आएगा। नहीं सर, इससे हमको थोड़ा उतना समझ में नहीं आ रहे, तो ये वैल्यू आप थोड़ा बढ़ा लो। Let I take 7 instead of 5. Then in the break output has no impact, 0 1 2 ही आएगा, because whenever you say break, rest number of iterations completely skipped. Here only upon that particular iteration that is skipped, so you will get 5 6 also here. You can check the difference between break and continue output. Pass I have already with case I have told you. Just you can write wherever you want to write empty class or empty method or empty function or empty case, empty loop, just you can put pass. Okay, so these are what different jumping control statements. इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए कोशिश करता हूं, आप इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। लेट्स से I am writing for I in the range of 1, 7, 2, for j in the range of I if j mod 2 is equal to 1, break print I plus j. Okay, नहीं तो एक मिनट रुको, मैं यहां ये लिख रहा हूं प्रिंट I प्लस j if j mod 2 equal to 1, break. Now the question is the number of times print statement executed is dash. एक मिनट रुको, मैं इसको होमवर्क बनाता हूं। Same, if I replace this with the continue, what would be the answer? Means for I in the range of 1, 7, 2,
for j in the range of I, print I plus j if j mod 2 equal to 1, continue. Same program, just I replaced break with continue. Question is also same. The number of times print statement executed is डैश. सो इसका जवाब मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करना है. ठीक है, ये दोनों होमवर्क क्वेश्चंस का जवाब. ओके, मैं अभी आगे बढ़ता हूं बेटा. आज वाला टॉपिक एक्चुअली हम आज ये डिस्कस करना था, लेट हो गया था. सो एटलीस्ट स्टार्ट तो करेंगे. सो स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट. व्हाट इज ए स्ट्रिंग? See, any data type is a class in Python, and for that data type, when you create a variable, that becomes an object of that particular class. So how do you define this string? It is a class of 0 or 1 or multiple characters. How you can create the string? You can write object is equal to single quote or object is equal to double quote or object is equal to triple quote when you have multiple line, or with the constructor str you can create. So in either of these you can follow to create the string. For example, I can say x is equal to gate or x is equal to gate or x is equal to gate exam 2025 or x is equal to str of gate. Anyway is valid to create the string. And whenever you create the string, you can find the length of the string with len function, which I have already discussed in the last class. I think very first class. Now इसके साथ एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं. देखो, फॉर लेट्स से st is equal to gate exam. Okay, if I say for I in st, print I, comma end with comma, let's say, इसका आउटपुट क्या आएगा?
अब आपको ये समझ में आएगा वो सिंटैक्स फॉर ऑब्जेक्ट इन इटरेबल. I is object here, st is what? Iterable. Now I is each in the gate exam means I equal to G, I equal to A, I equal to T, so on up to M. So output हमको G, A, T, E, space, E, X, A, M आएगा. Okay, or else you can write like this also. Let's say ST is equal to gate exam for I in the range of length of ST print ST of I, comma, end with comma. So what would be the output? It means what is the length of ST? Length of ST is number of characters in the string, that is 9 including space. So it is equivalent to for I in the range of 9 means 0 to 8. So all the characters gets printed. ST of 0. No, up to 8. Now it would be GATE space exam. So ST of 0 means G, ST of 1 means A. Like this you will get the same output, but you can do it in different ways. Hope you got this. So here what this 0 to 8 we call as indices, index. So we can have index in both positive and negative. Before we see that, let us quickly see list also, because with both string and lists we can cover this indexing concept commonly. So what is a list? It is definitely a collection type. You can say it is a mutable ordered collection, means it gives index and maintain the data in order. Mutable means you can modify, means objects का reference हम change कर सकते. Next, it supports duplicates. And how do you create the list? Object is equal to, you can give all the values within square brackets, or you may give an empty list, or
you can create with the list constructor, that is object is equal to list. Okay. So just a simple example, let's say LIS is equal to 10 comma gate comma 3.47 comma 12.6J comma X comma 15. If you look at this, I have written different forms of data. Okay, let me put true, none also. So I have kept Boolean type, complex type, integer type, float type, string type, none type. Even we can put tuples sets also, as we have not yet discussed, I have not included them. So list supports different forms of data also. Okay. And here also how these gets stored? Ten gate 3.47 12 plus 6J X 15 true none. Just like string, even list also will be indexed. So LIS of 0 means 10, LIS of 1 means gate, LIS of 2 means this one, so on. Got it? Now, what is this indexing? Strings, lists, of course tuples, supports both positive and negative indexing. Positive and negative indexing. Positive indexing starts with 0 by default, that too from start to end. And negative indexing starts with -1 by default, and from where it starts counting? From end to start. From last to first, this indexing will continue. Okay. So example, suppose if I write I is equal to gate exam and some L is equal to 10, 20, 50, minus 34, minus 23,
27, 10, suppose, how these will be indexed in both positive and negative. If we see 𝐂𝐴TE space 𝐸𝑥𝐴M, positive indices would be from 0 start to end. So these will be positive index, and negative index starts from -1 from end to start. So -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, like this. Same way here 10, 20, 50, -34, -23, 27, 10. So this will be positive index, and a negative index starts from -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. So you access now with the index, either with positive index or negative index. Like if I say I of 5, that is equal to I of -4. I of 7, that is equal to I of -2. Here L of 3 equal to L of -4, L of 6 equal to L of -1, like that. So you got some idea about this indexing? And then most importantly, we have to talk about slicing. This is a very important and interesting concept with both with the strings, lists as well as tuples. What this slicing is, this colon operator is called, slice operator. Actually it is a separator, we have to say. Actually it is a separator. Instead of operator, most apt term we can say is separator, because it separates three entities. What are they? Start, stop, step. So between these start, stop and step, you place colon. So to separate these three,
we are using colon symbol. How this will be used? Directly with the example, if I explain you, let us say I is equal to GATE exam. Now if I try to print I of 1 to 5, I try to print I of 2, I try to print I of 6, print I of 1, 7, 2, print I of -1 to -5, print I of -1, print I of -5. So if I write these different print statements, what would be the output? The given string is 𝐂𝐸𝐸𝐿 negative indices will be -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. Now, when I say print I from 1 till 5, stop is always excluded. That means from 1 to 5 exclude करके till then you have to print. So you will get what output? ATE space. And when I say print from 2 and I left everything just by putting colon, means from index to everything. So I get TE space exam. Like this, you try giving me other outputs, everybody.
Yes. Okay. See, I of up to 6. So from 0 starting till 5 it prints. So you will get GATE space E. Print I of 1 up to 7, every time the step should be 2. So it would be A, E, E, up to 7 means after this it goes to 7, so it stop. Here -1 to -5. From -1 there is nothing to go, so it has no output. It should be actually -5 to -1. So here from -1 nothing. Now from -1 onwards, whatever is there you print. So it prints only M. Now up to -5 you print. So you will get what? GATE. Like this. Okay. Vaibhav Pandey, can you put it in English? टीचिंग में रख लेंगे मतलब? I did not understand what you wanted to ask. Do you get this? All right. So we will continue. आज हम पूरा कंट्रोल स्टेटमेंट्स खत्म करके इटरेटिव स्टेटमेंट्स, अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स और जंपिंग स्टेटमेंट्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स, इसमें इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग हमने डिस्कस किए थे. हम इससे अच्छा सा हम एक्सप्लोर करेंगे और डीप नेक्स्ट क्लास में. एंड आपको मैं 2 होमवर्क क्वेश्चंस दिया था. प्लीज गिव योर आंसर्स इन द टेलीग्राम ग्रुप. गेट निकल जाए तो टीचिंग जॉब लग जाएगी. वैभव पांडे, गेट में टीच करना है क्या? आप रेगुलर नॉर्मल कॉलेज में टीचिंग करना के लिए गेट का जरूरी नहीं. उसके अलावा वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट करके कंडक्ट करते. नहीं तो यूजीसी नेट है, यूजीसी कंडक्टिंग नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. दैट विल हेल्प फॉर बोथ research as well as teaching. So better if you can attempt UGC net. पूरा इंडिया में वो वैलिड है. उसका सिलेबस 30-40% गेट सिलेबस ही होगा, बट थोड़ा और भी सब्जेक्ट्स होगा. ओके, थैंक यू ऑल. होप you liked today's session. You understood all the concepts that we have discussed. See you tomorrow. Till then, have a great time, great day. Take care. Bye bye. Jai Hind.